ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 106 of the Ayodhya Kandam, which has 35 verses. Imploring Sri Rama with cogent reasons to accept the throne of Ayodhya, Bharata takes a vow not to return to Ayodhya but to continue in the forest in case Sri Rama does not grant his prayer. When they find Sri Rama adamant in the matter and insistent on implementing the words of their deceased father, Mother Kaushalya and others too joined Bharata and urged Sri Rama to grant his request. आज हम षड्दिके शतम की सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। भरत की पुण्य श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। एवं उक्त्वा तु विरते रामे वचनम् अर्थवत् ततो मंदाकिनी तीरे रामं प्रकृतिवत्सलम् उवाच भरतश्चित्रं धार्मिकं वचः को हि स्यात् ईदृशो लोके यादृशः त्वम् अरिन्दम। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही, शत्रु दमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। When Sri Rama became silent after making a significant speech as aforesaid, the pious Bharata for his part now addressed to Sri Rama, who was so fond of his people, the following agreeable and righteous submission on the bank of the Mandakini. Indeed, who can there be in this world such as you are, O tamer of foes? न त्वां प्रव्यथयेत् दुःखं प्रीतिर्वा न प्रहर्षयेत् सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्च पृच्छसि संशयान्। कोई भी दुख आपको व्यतीत नहीं कर सकता, कितना ही प्रिय बात क्यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। Neither can sorrow torment you, nor can joy exhilarate you. Though highly thought of by the elders, you nevertheless refer your doubts to them. यथा मृतः तथा जीवन् यथा सति तथा सति यस्यैष बुद्धिलाभः स्यात् परितप्येत केन सह। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्त बुद्धि प्राप्त हो गई हो, उसको संताप क्यों होगा। Wherefore should he grieve, he who has developed an attitude of mind by virtue of which, though living, he is as good as dead to the world, and which makes him as indifferent to the existent as to the non-existent. परावरज्ञो यश्च स्यात् यथा त्वं मनुजाधिप स एव व्यसनं प्राप्य न विषीदुम् अर्हति। नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वह संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। He who knows the self as well as the non-self as you do, O ruler of men, ought not to feel dejected even on meeting with adversity. अमरोपम सत्त्वस्त्वं महात्मा सत्यसंगरः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च बुद्धिमांश्चासि राघव।
रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्गुणों से संपन्न महात्मा, सत प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान है। Possessed of valor, comparing with that of the gods, and endowed with great fortitude, you are true to your promise, all knowing, all seeing, and wise too, O Scion of Raghu. न त्वम् एवं गुणैर्युक्तं प्रभाव अभव कोविदम् अविह्यततमं दुःखमासीद् अयितुमर्हति। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असहाय दुख नहीं आ सकता। Even affliction, which is most unbearable for us, ought not to assail you, endowed as you are with such virtues and conversant with the origin and end of living beings. प्रोषिते मयि यत् पापं मात्रा मत्कारणात् कृतं शुद्रया तदनिष्टं मे प्रसीदतु भवान् मम। जब मैं परदेश में था उस समय नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभिष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। The sinful deed in the shape of bringing about your exile, which was perpetrated by my mean mother for my sake when I was away, was not to my liking. Therefore, be gracious to me. धर्म बंधेन बद्धोस्मि तेने मां नेह मातरम हन्मि तीव्रेण दंडेन दंडार्हा पापकारिणीम्। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। I am bound by the fetters of morality, which forbid a warrior to lay his finger upon a woman. Hence, I do not kill on the spot with a severe punishment my mother of sinful deeds, who is so deserving of punishment. कथं दशरथात् जातः शुभाभि जनकर्मणः जानन् धर्मम् अधर्मं च कुर्यां कर्म जुगुप्सितम्। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? How can I, sprung as I am from the lions of Dasharatha of noble birth and deeds, and knowing as I do right and wrong, perpetrate an odious act like killing my own mother? गुरुः क्रियावान् वृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च तातं न परिगर्हेऽहं दैवतं चेति संसदि। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा पिता और देवता रहे हैं और उस समय पर लोकवासी हो चुके हैं, इसलिए इस हरि सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। I do not wish to denounce my father in an open assembly because he had a number of sacrificial performances to his credit, was aged and worthy of respect, has joined the majority and was my father and a deity to me. को हि धर्मार्थयोः हीनमीदृशं कर्मं किल्बिषं स्त्रियः प्रियचिकीर्षु संकुर्यात् धर्मज्ञ धर्मवित्। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है? Indeed, what man who knows the principles of morality would perpetrate such a sinful act, unproductive of religious merit and worldly prosperity, with intent to please a woman, O knower of what is right? अंतकाले हि भूतानि मुह्यन्तीति पुरा श्रुतिः राज्ञैवं कुर्वता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः कृता। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया।
There is an old adage saying that living beings invariably get infatuated at the hour of death. That saying has been illustrated to the world by the king while acting as he has done. स्वाद्वर्थम् अभिसन्धाय क्रोधान् मोहाच्च साहसात् तातस्य यदधिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद् भवान्। पिताजी ने क्रोध, मोह और सहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। Keeping in mind a noble purpose, nullify that transgression that has been committed by father for the fear of wrath of Kaikeyi, or through infatuation and precipitance. पितुर्हि समतिक्रान्तं पुत्रो यः साधु मन्यते तदपत्यं मतं लोके विपरीतम् अतोऽन्यथा। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संतति नहीं है। A son who mends the errant transgression of his father is accounted as a son in the real acceptance of the term in the world. He who acts otherwise than this is quite the reverse of a son. तद् अपत्यं भवान् अस्तु मा भवान् दुष्कृतं पितुः अति यत् तत् कृतं कर्म लोके धीर विगर्हितम्। अतः आप पिता के योग्य संतान ही बने रहे, उनके अनुचित कर्म का समर्थन न करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया वह धर्म की सीमा से बाहर है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। Therefore be you a true son. Do not countenance the sinful act of our father by implementing his word. The act which has been perpetrated by him is in contravention of all principles of morality and is therefore utterly condemned in the world by the wise. कैकेयीं मां च तातं च सुहृदो बान्धवांश्च नः पौरजान् अपधान् सर्वां स्त्रातुं सर्वमिदं भवान्। कैकेयी में पिताजी सह गुण, बंधु बांधव, पुरवासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। Be pleased to grant all this prayer of mine in order to save Kaikeyi, myself, father, nay, our friends and relations, as well as all the citizens and people of the countryside. क्व च आरण्यं क्व च क्षात्रं क्व जटाः क्व च पालनम् ईदृशं व्याहतं कर्म न भवान् कर्तुमर्हति। कहाँ वनवास और कहाँ क्षत्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन, ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए। What congruity is there between forest life on the one hand and the duty of a Kshatriya on the other? Between wearing matted locks on one's head and protection of the people? You ought not to perpetrate such an incongruous act as may stand in the way of your discharging the duty of a Kshatriya, which is the protection of the people. एष हि प्रथमो धर्मः क्षत्रियस्य अभिषेचनं येन शक्यं महाप्राज्ञ प्रजानां परिपालनम्। महाप्राज्ञ क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। Indeed, it is the foremost duty of a Kshatriya to get himself consecrated as a king, through which act alone it is possible to protect the people. O highly enlightened brother, कश्च प्रत्यक्षम् उत्सृज्य संशयस्तम् अलक्षणम् आयतिस्तं चरेद् धर्मं क्षत्रबन्धुर् अनिश्चितम्। भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख
के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। Nay, neglecting a duty yielding visible joy, what Kshatriya esteemed by his race would practice a virtue which is of doubtful result, which does not promise happiness, which brings its rewards in a future state only, and which is undefined. अथ क्लेशजम् एव त्वं धर्म चरितुम् इच्छसि धर्मेण चतुरो वर्णान् पालयन् क्लेशमाप्नुहि। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हो तो धर्म अनुसार चारों वर्ण का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। If you desire to pursue a virtue following from hardship alone, undergo suffering while protecting the four divisions of society by recourse to righteousness. चतुर्णाम् आश्रमाणां हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम् आहुर्धर्मज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रम में गृहस्थ को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हो? The knowers of what is right definitely declare the life of a householder to be the noblest and best of all the four stages of life, inasmuch as it is depended upon by all others. How then do you speak to abandon it, O knower of the principles of righteousness? श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतो ह्यहं स कथं पालयिष्यामि भूमिं भवति तिष्ठति। मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूँगा? I am decidedly junior to you in point of learning, rank, and date of birth. As such, how shall I be able to rule over the earth when you are present? हीन बुद्धि गुणो बालो हीनस्थानेन च अपि अहं भवता च विना भूतो न वर्तयितुम् उत्सहे। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता, राज्य का पालन तो दूर की बात है। A mere child as I am, of poor understanding and virtues, and also placed in an inferior position as compared to you, I cannot even live without you, much less rule over the people. इदं निखिलम् अपि अग्रयं राज्यं पित्रयम् अकण्टकम् अनुषादि स्वधर्मेण धर्मज्ञ सह बान्धवैः। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का ये सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ सर्व धर्म अनुसार इसका पालन कीजिए। A knower of what is right, rule with your kinsmen over the whole of their foremost ancestral kingdom without opposition according to the code of conduct prescribed to you. इहैव त्वाम् अभिषिञ्चन्तु सर्वाः प्रकृतयः सह ऋत्विजः सवशिष्टाश्च मंत्रविन् मंत्रकोविदाः। मंत्रज्ञ रघुवीर, मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं, ये सब लोग यहीं आपको राज्याभिषेक करें। Let all the ministers as well as the priests, including Vashishta, well versed in sacred formulas, conjointly consecrate you as the king of Ayodhya on this very spot, O knower of the sacred texts. अभिषिक्तः त्वम् अस्माभिः अयोध्यां पालने व्रज विजित्य तरसा लोकान् मरुद्भिरिव वासवः। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मृत गुणों से अभिषेक हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चले। Consecrated by us as Indra by the Maruts, the wind gods, and having conquered the worlds by dint of your might, march you back to Ayodhya in order to rule over it.
ऋणानि ऋण्यपा कुर्वन् दुर्हृदः साधु निर्दहन् सुहृदः तर्पयन् कामैः त्वमेव अत्रानुशादि माम्। वहाँ देवता ऋषि और पितरों का ऋण चुकाए, दुष्ट शत्रुओं का बलि भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छा अनुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहे हैं। Discharging the three obligations you owe to gods, rishis, and mains severally by offering oblations, studying the Vedas, and procreating children, completely destroying the foes and gratifying your near and dear ones through their desired objects. You instruct me at Ayodhya itself. अद्य आर्य मुदिताः सन्तु सुहृदः ते अभिषेचने अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रसादात् ते दिशो दश। आर्य आपका अभिषेक संपन्न होने पर सहृदय गुण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाए। Let those who are friendly to you feel rejoiced today on your consecration as the king of Ayodhya, O noble brother. Let those who are inclined to cause pain to you run frightened in every direction today. आक्रोशं मम मातुश्च प्रमृज्य पुरुषऋषभ अद्य तत्र भवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात्। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंकों को धो पहुंचकर पूज्य पिताजी की को भी निंदा से बचाइए। Wiping off the obloquy attached to me as well as to my mother, O jewel among men, save our esteemed father as well from remorse today. शिरसा त्वापि याचेऽहं कुरुष्व करुणां मयि बान्धवेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। I implore you with my head bent low, pray take pity on me as well as on all your kinfolk, even as Lord Shiva, the supreme deity, does on all created beings. अथवा पृष्ठतः कृत्वा वनमेव भवानीतः गमिष्यामि भवता सार्धम् अप्यहम्। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकराकर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। Else, if setting aside my request, you proceed from this place to the forest alone, I too shall depart with you. तथापि रामो भरतेन तां यथा प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः न चैव चक्रे गमनाय तत्त्ववान् मतिं पितुस्तद्वचने प्रतिष्ठितः। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्व गुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित हो रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। Even while being propitiated as above with bowed head by Bharata, who was sinking in spirit, the graceful Sri Rama, the ruler of the globe, who had a strong will and clung fast to the word of his father, giving consent to his exile, did not feel inclined to proceed to Ayodhya. तदद्भुतं धैर्यम् अवेक्ष्य राघवे रामं जनो हर्षमवाप दुःखितः न याति अयोध्याम् इति दुःखितो अभवत् स्थिरप्रतिज्ञत्वम् अवेक्ष्य हर्षितः। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, ये सोचकर वह दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। Perceiving such wonderful firmness in Sri Rama, a scion of Raghu, the people of Ayodhya experienced joy and felt disconsolate at the same time.
They were distressed to find that he was not going to Ayodhya and felt rejoiced to note his firmness of resolve. तं ऋत्विजो नैघमयूतवल्लभाः तथा विसञ्ज्ञा शुरुकलाश्च मातरः तथा ब्रुवाणं भरतं प्रतुष्टुवुः प्रणम्य रामं च ययाचिरे सः। उस समय ऋत्विज प्रवासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वक बातें कहने वाले भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सब ने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। The priests, the citizens and the leaders of different bodies of men, as well as the mothers of Sri Rama and others, who had all been rendered senseless as it were and had teardrops in their eyes, complimented Bharata, who was speaking in that strain and bowing down low to Sri Rama, joined Bharata in his supplication to Sri Rama. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 106 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadam Lokabhiramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।